So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we'll be discussing about Ramon Magsaysay Award 2025. And I'm sure you must be aware in the last 1 month it was very much in the news. And the reason why I'm going to discuss this is because an Indian organization has got the award. So it becomes even more important. Okay. So am I audible, visible? If my voice is reaching, please write yes in the comments so that we can begin with the class. मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Okay, let me check. Fine. So, yes, good afternoon, everyone. Let us move on. So, let us begin with the first question. That is why I've told you that we discuss it with the help of question and answer. Ramon Magsaysay Award is a very famous award given by which country? Japan, Philippines, South Korea, or USA? What is the right answer? बताइए क्या सही जवाब है? बहुत फेमस अवार्ड है. इसका एक निक नेम है, कोई बता सकता व्हाट इज इट्स निक नेम, फेमसली कॉल्ड एज? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्तिकेय, द्विजा, कृषि, सचदेवा, रीवा, नंदिनी. बहुत से लोग आंसर किया, सत्विकी, आर्य. यू आर राइट. बी इज द राइट आंसर. इट इज गिवन बाय फिलीपींस, नॉट बाय यूएसए. ऑप्शन बी. ठीक है. एंड यस, इट्स कैपिटल इज मनीला. यस. Nobel Prize of Asia या Nobel Prize of East. Yes, very good. So it is famously called as Asia's Nobel Prize या Nobel Prize of Asia, जो भी कह लो ना. Okay. ऐसे Nobel Prize पे we'll discuss it in August month. ठीक है. So that is what you should be knowing. Now, the second thing is, can you please tell me a very important bank which is headquartered in Manila? Just wanted to know that whether you know or not. A very important multilateral bank there. Anyone? Not NDB, no. ADB, yes, Karthikeya, you are right. Asian Development Bank, yes. Okay. Okay, and someone has mistakenly said NDB. So NDB का headquarter कहाँ है? Can anyone tell me? New Development Bank, which is also famously called as BRICS Bank. Yes, Shanghai, very good. इसी को BRICS Bank कहते हैं. BRICS Bank, headquartered in Shanghai. ठीक है? That is what you should be knowing. हाँ, very good. और किसी ने वर्ल्ड बैंक ही बोल दिया, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी बता दीजिए. Where is the headquarter of World Bank? Yes, good afternoon. Welcome to the class, Chandrika. World Bank headquarters in Washington DC. पूरा लिखेगा because Washington means Washington state भी है US में. So Washington DC would be the right answer. ठीक है. Better to write Washington DC because there is one more Washington which is on the west, northwest of USA. In the USA, Washington state. तो वो कंफ्यूज मत कीजिएगा. This is Washington DC, the capital. IMF and World Bank both are headquartered there. ठीक है. खैर. So we were talking about Ramon Magsaysay Award. So here is India. This is Philippines, है ना? Its capital is Manila. Now please tell me. So I'm giving 4 options. This Philippines lies in which region? I have given 4 options. Philippines will lie in which region? A, B, C, D. So your conceptual clarity will be checked here. जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो आप आंसर कीजिए. हाँ, प्लीज आंसर व्हाट आई हैव आस्क्ड, है ना? यस, दी इज द राइट आंसर. देखो ये वाला जो ये सेंट्रल एशिया हो गया, है ना? ये सब रीजन को मिडिल ईस्ट कहते हैं. ये वाला रीजन को साउथ एशिया कहते हैं.
and this region is called as Southeast Asia, जो कि नोटा में ही सेट हो रहा है ना, Southeast Asia. And they have made a grouping. What is that called? एक important international grouping है made by Southeast Asian countries. So Philippines lies in Southeast Asia. These conceptual clarity should be there. और ये वाला ईस्ट एशिया हो गया है ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना. हाँ, आसियान, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ठीक है. Yes. So let's move on to the next one. Now Ramon Magsaysay was what? And these are the four options. Very famous scientist from Philippines, former president of Philippines, former PM of Philippines, former chief justice of Philippines. What is the right answer? Yes, the right answer is very good. Former president of Philippines. B is the right answer. So very good. People are answering it. Many people have answered. I'm very happy to know कि आप लोगों को ये सब बात पता है. Now let's move on to the next one. Ramon Magsaysay was the president of Philippines from which tenure? And can you please share something regarding his how he actually his tenure ended? तो मैं इतना डिटेल क्यों जा रहा हूँ? Because I'll tell you. देखो CLAT 2021 में I'll give you the proof why I'm asking. So Gandhi Peace Prize was asked. Okay, and they asked in detail who gives the award, है ना? Reason for the award, why the award is given, first winner, who got the win, who won in 2014. तो उतना डिटेल में जाते हैं. ठीक है. It was against communism. Yes, you are right. Assassination, he died. 1953 to 57 is the answer. And 1957, how he was removed or how actually his tenure ended. क्या हुआ था? Assassination नहीं हुआ था. He died. Yes, you are right. But how? Yes, plane crash. Very good, Karthik. So he died in a plane crash. So B is the right answer to this question. Okay. Okay. So let's learn something about Mr. Ramon Magsaysay. He was hardly for 4 years, even less than 4 years. You can see 30th December 1953 to 17th March 1957. 7th president of Philippines from December 1953 until his death in a aircraft disaster. So आप देख सकते हो है ना, that is the most important thing. बाकी rest up, he had earlier served as defense minister also and other post. So he was actually going, he had gone from Manila to Cebu City, and there were some actually he had gone for some convention in some university, and he was coming back when actually his plane met with an accident. Okay, तो ये है Manila and this is Mount Cebu City. ठीक है. So he was actually coming back from the same Cebu City, and somewhere here he actually met with a plane crash and he died. So this you should be knowing about. Now let's talk about. अच्छा एक दो चीज और बताओ. Recently we have seen a ex-Philippines president arrested by ICJ. What is his name? Anyone? और करंट फिलीपींस प्रेसिडेंट का नाम भी बता दीजिए. इसके स्पेलिंग एक बार देख लेता हूं. दुतोर्ते. यस यू आर राइट. हाँ, इनका नाम रॉड्रिक दुतोर्ते करके है ना. एंड करंट वन का नाम जो है वो है बोंग मार्कोस. ठीक है, करंट प्रेसिडेंट. He was arrested because when he was the president, there was an allegation that when he was suppressing the drugs crime, he had done human rights violation. ये इन पर इल्जाम है. Arrested by ICC, not ICJ. Sorry, International Criminal Court. ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए. Okay. Now the next one is about the Ramon Magsaysay Award. Let's talk about this. So this award was established in which year?
Yes, Aryan Kartikeya Krishi. B. The right answer is option B, 1957. So in the same year when he died, he was this award was established, and the first award was given in the year 1958. Okay, that is what you should be knowing. So B is the right answer to this question. Okay. Now let's move on to the next question. सर ये अवार्ड में कंफ्यूजन है, नवंबर में देते हैं. आई मीन उनके बर्थडे कब है? 31 अगस्त को उनकी बर्थडे, आई थिंक उसी में देते हैं ना. रेमन मैक्सेसे अवार्ड ceremony date. Let me check since you are asking. Okay, 7th November को दिया जाएगा. Announcement has been done. Okay, on 31st August, I think it was announced somewhere, है ना? But the award ceremony will happen on 7th November 2025. ठीक है? Someone was asking. जैसे नोबेल में क्या होता है? नोबेल प्राइज is generally announced in October, है ना? First, second week, but it is given on 10th December. But the death date, I think, of Mr. Alfred Nobel, है ना? So similar to that, 31st August it was announced, but it will be given on 7th November this year. ठीक है? Yes, very good, Karthik and Niharika. I was asking about this. I didn't give the option. मैंने ऑप्शन नहीं दिया था. रेमन मैक्सेसे अवार्ड जो है, it was established in April 1957 by the trustees of Rockefeller Brothers Fund. ठीक है ना? Based in New York City along with the Philippines government. ठीक है, तो ये X जवाब देना था. And it is called as Nobel Prize of Asia. ठीक है? So you can see it here. Yes. Let's move on, है ना? आप देख सकते हो Rockefeller's family. It was founded in New York City 1940. And these are the founders. New York City based organization है ना? And yes, along with the Philippines government, this award is given. So it was established in 1957, but the first award was given in 1958. पहला award 1958 को दिया गया. Now, let's move on to the next one. तो इस तरह का सवाल आया था 2021 में. Rockefeller's brothers and fund and Philippines government both together. ठीक है, दोनों मिल करके establish किया था रेमन मैक्सेसे अवार्ड. ठीक है. So in Gandhi Peace Prize, they had asked what is the reason why it is this is awarded. So similar to that, I'm asking this question. Ramon Magsaysay Award 2025 is awarded for what? Let me see how many of you can answer. इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं. Yes, Chandrika, but why are you putting question mark? The answer is D of 4 only. ठीक है, हम दिखाते हैं. देखो एक्चुअली क्या है. पहले ये सब पे दिया आता था, है ना? ऐसे यहाँ पे देख लो. These awards are given in 6 categories, 5 of which were discontinued in 2009. तो पहले ये 5 पे भी दिया आता था, अब सिर्फ लास्ट वाले पे दिया आता है. ठीक है. So 2008 में ये सब लास्ट दिया गया. And this is being given. So today only this under this category is given. और एक होता है exceptional category. We'll discuss it, है ना? तो the right answer is only this. Because मैंने यहाँ पे लिखा था 2025. Okay. Earlier it used to be given for all, but now only option the last one is correct. Emergent leadership पे अब दिया था सिर्फ only for this. ठीक है. मान लो कोई जर्नलिस्ट को देना है. So again, if some journalist is supposed to be given, so they will give here in this category. Okay. Why I'm discussing about like journalists or any other personality, because we will see it. पहले देखो पब्लिक सर्विस कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्विस में जर्नलिज्म में उसमें दिया था, बट नाउ दिस इज गिवन अंडर दिस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट 2025 winners. This is the most important point of the entire class. इसको स्टार लगा लीजिएगा. Which of the following NGO from India has got Ramon Magsaysay Award 2025?
Yes, educate girls. B is the right answer to this question. It is a self-help group type, या NGO type जो भी कह लो है ना, non-profit है ना, first Indian non-profit to receive Ramon Magsaysay Award. Who is the founder of this? And it is based in which state? कौन है फाउंडर का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए. Who is the founder? सफीना हुसैन है ना, ये याद रखिएगा. हाँ, works in rural areas. Yes. So educate girls. An Indian organization works to educate unprivileged girls across the country. है ना, foundation to educate girls globally. है ना. It has got, there are other two also. ठीक है, but ये the most important is this. And the idea is to address the gender injustice in education in areas most remote and rural areas. ये इनका काम. हाँ, सफीना हुसैन, ये नाम याद रखिएगा. Yes, Karthik, very good. Education is the first Indian, Educate Girl is the first Indian organization to win. Organization में पहली Indian organization है, ठीक है, to win Ramon Magsaysay Award. Started since 1958. And award was established in 1957, but the first award was given in 1958. ठीक है. Okay. Now there were other options also. थोड़ा सा उसको discuss कर लेते हैं. Self-employed women association. This is by Ela Bhatt. इनको भी मिला था Ramon Magsaysay earlier. ठीक है, earlier she had got. बचपन बचाओ आंदोलन का आजाद सत्यार्थी. Why is famous? And मजदूर किसान शक्ति संगठन, अरुणा रॉय, former IAS officer, is associated with this. She was instrumental in RTI. This organization was instrumental in forcing the government or pressurizing the government to come up with RTI, Right to Information Act. सेवा गुजरात में to promote employment among female. ठीक है. बचपन बचाओ आंदोलन. Yes, Krishi says Deva, you're right. So he had got Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai for their struggle against suppression of children and young people and for the right of all children to education. बचपन बचाओ आंदोलन. ओके, ठीक है. सो अरुणा रॉय को मैंने बता दिया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन. इट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कमिंग अप विद आरटीआई. एससीओ पे भी हैव डन अ क्लास. रीवा, गो टू द लाइव सेक्शन, स्क्रॉल डाउन. यूट्यूब पे हमारी क्लास पे जाना, लाइव सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करना, यू विल गेट अ क्लास. रेड कलर का थंबनेल होगा. वी हैव डन एससीओ समिट. ठीक है. Okay, Seva Self-Employed Women's Association established by Ela Bhatt. इनको भी earlier she had got Ramon Magsaysay. We will discuss it. ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे. इंडाइसेस पर ये कार्तिकेय थोड़ा सा लेट हम लोग डिस्कस करेंगे. अक्टूबर नवंबर में आप एक बार रिमाइंड करा देना नवंबर में, because so that all the indices are covered. ठीक है. Okay. Now, so these are the 3 winners of Ramon Magsaysay this year. First is Shahina Ali from Maldives. एक फर्स्ट है ना. सेकंड ये देख लो, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, वही है सेम जो इंडिया का एनजीओ है. एंड थर्ड इज फ्लावियानोलो एंटोनियो विलानोवा, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, फ्रॉम फिलीपींस. सो दीस 2 हैव गॉट, दीस 3 हैव गॉट. दिस इज फ्रॉम इंडिया, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली बाय सफीना हुसैन. तो ये याद रखिएगा. ओके, तो अब हम देख लेते हैं, ये इनका रिपोर्ट है ना. 67th Ramon Magsaysay अवार्ड है ना, 2025 ऑफिशियल अनाउंसमेंट. 1958 में फर्स्ट इट वाज गिवन है ना. और कुछ है, हाँ, एजुकेट गर्ल्स के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा. इट्स कमिटमेंट टू addressing cultural stereotype through the education of girls, young women, liberating them from bondage of illiteracy, infusing them skills, literacy, etc. So ये ठीक है. वह दूसरा है शाहिना अली, ये तो फर्स्ट हो गया. शाहिना अली फ्रॉम मालदीव्स. तो इसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो. शी इज फ्रॉम मालदीव्स, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दे विल नॉट आस्क इन डिटेल, जस्ट हैव अ नेम, रिमेंबर द नेम. थर्ड है, इनका नाम है, इज एक्चुअली फ्रॉम फिलीपींस है ना. लाइफ लॉन्ग मिशन टू अपहोल्ड डिग्निटी ऑफ पुअर एटसेट्रा. सो ये इंडिया है. समवेयर हियर यू विल फाइंड, यहाँ पे मालदीव्स मिलेगा और ये फिलीपींस मिलेगा. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेट गर्ल्स, वही वाला ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है ना. फाउंडेशन वाइडली नोन एज एजुकेट गर्ल्स है ना. फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स है ना. ये तो वी आर डन. और इसमें है ना, ये हेल्प करते हैं दोस्त कम्युनिटीज आइडेंटिफाई, एनरोल, सपोर्ट आउट ऑफ
स्कूल गर्ल्स, इंश्योरिंग गर्ल्स एंड वुमेन इंडियाज मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, है ना, 2007 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। द ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेस लोकल वॉलंटियर्स नोन एज टीम बालिका, ये पूछ सकते हैं। ये डोर टू डोर जाती हैं ताकि those who are have those girls who are not attending schools, they should come to the schools, है ना, ये बताना चाहिए। हाँ, ये हो गया। फाउंडर इज सफीना हुसैन, है ना, फर्स्ट for being first Indian non-profit या NGO which has got non-government organization or non-profit organization to get this, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। टीम बालिका हो गया। reach 10 million learners in the next day, है ना, that is the target। चलो इतना काफी है, that is more than enough to know। now let's talk about earlier awards, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? वो क्या करेंगे, sometimes what they do is जितना अभी हम लोग पढ़ा ना, they will give you one passage and they'll ask from here। So because they want to make the question complicated and difficult, so this is what they do, they ask you in previous, पुराना उठा के पूछेंगे जो आप कभी सोचे ही नहीं होगे पढ़ने का। So but we have to do it, है ना। I have told you currently this award is being given, और ये सब 2008 के बाद बंद कर दिया गया था। But we will discuss the earlier ones। सेवा एनजीओ को नहीं मिला था, ईला भट्ट को मिला था, कृषि सचिव, ठीक है। इसमें सफीना हुसैन को नहीं मिला है, इनको मिला, ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। सो वेलकम, ठीक है, आएगा, देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, अब सबसे पहले हम लोग इस पे जानते हैं, गवर्नमेंट सर्विस, है ना। सो गवर्नमेंट सर्विस में इनको मिला था, इनको मिला, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, चिंतन सीडी देशमुख, इनका नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड दिस? हु वाज सीडी देशमुख? I think he has some relation with RBI, if I'm not wrong. CD Deshmukh. First RBI governor, शायद. First Indian to be appointed RBI governor. Yes, I was right. First Indian RBI governor. ठीक है, तो ऐसे भी जीके का क्वेश्चन हो गया। ओके, इनको मिला था गवर्नमेंट सर्विस, यानी ये वाला सेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। एंड लेट मी सी, आप देखो दूसरा चलते हैं, पब्लिक सर्विस, दिस वन 1958 से 2008 के बीच। इसमें कोई इंडियन है, दिख रहा है? नीचे जाओ कहीं पे लिखो, हाँ, जयप्रकाश नारायणन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? 1974 जेपी मूवमेंट, किसी को याद है? 5 जून 1974 he brought संपूर्ण क्रांति, in English it is called as total revolution। Yes, anybody from Bihar must be knowing there is a train connecting New Delhi from Patna, Sampurna Kranti Express, Bihar movement। Yes, in fact, हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, जेपी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टेड फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसी कैटेगरी में वी आर इन अगेन इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में वी आर हैविंग MS सुब्बुलक्ष्मी, है ना, शी इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग। देन मणिबाई देसाई, है ना, गांधीयन। फिर बाबा आमते फॉर हिज वर्क ऑन इन लेप्रेसी पेशेंट्स, ठीक है, ये सब आइडिया होना चाहिए, बट दिस वन इज इंपॉर्टेंट। जेपी मूवमेंट 1974 में हुआ था, 5 जून को, ठीक है। अब और भी इसी सेम कैटेगरी में लक्ष्मी चांद जैन, बानू जहांगीर सोयाजी एंड महेश चंद्र MC मेहता। MC मेहता तो समझ गए होगे, वाई MC मेहता, वेरी फेमस केस, प्लीज टेल मी गाइस, MC मेहता केस क्या जिससे रिलेटेड है? प्लीज टेल मी, एनवायरमेंट से रिलेटेड, वेरी फेमस सुप्रीम कोर्ट केस, MC मेहता केस आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी। एनीवन? The Supreme Court said right to clean environment is a fundamental right, and after that the Supreme Court said that yes, we need to teach ecology environment books in the schools। आप अपने पेरेंट्स दादा उदा से पूछना, पहले इकोलॉजी की किताब नहीं पढ़ाई जाती थी स्कूल में, है ना, बट nowadays we see because of these judgments, ठीक है। तो इनको मिला था। फिर विश्वनाथन शांता को मिला था इंडिया में, ठीक है, कैंसर इंस्टीट्यूट इन चेन्नई के अगेंस्ट। फिर हम चलते हैं थर्ड, कम्युनिटी लीडरशिप। कहां पे हम लोग? सेकंड वी आर डन, थर्ड पे चलते हैं, कम्युनिटी लीडरशिप 1958 to 2008। चलो, इसमें विनोबा भावे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाई इज इंपॉर्टेंट, प्लीज टेल मी। भूदान मूवमेंट फ्रॉम पोचापल्ली तेलंगाना, भूदान मूवमेंट, voluntary giving up lands, so he actually motivated those landed people or zamindars to voluntarily give up the land, है ना, when there were actually like I would say
जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, दैट टाइम ही टॉक्ड अबाउट इट. फिर दलाई लामा जी को मिला है, ठीक है, बट ही इज नॉट इंडियन, बट जस्ट हैव एन आइडिया. फिर और कम्युनिटी लीडरशिप में वर्गीस क्यूरियन, ट्रांसलेटेड गीता टू मराठी. अच्छा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, इसको देख लीजिएगा. वर्गीस क्यूरियन को मिला है वाइस फेमस. अच्छा, इनका नाम देख रहे हैं मलेशिया से, ये भी आई थिंक इंडियन ओरिजिन के ही आदमी लग रहे हैं, बट आई थिंक हो सकता है सिटीजन वहां के हो. खैर, वर्गीस क्यूरियन वेरी इंपॉर्टेंट. अमूल, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया. यस, ऑपरेशन फ्लड. अमूल सब इनसे रिलेटेड है, ठीक है. ये दोनों भी इंडियन, बट दे आर नॉट वेरी फेमस. इनका नाम काफी आता है, ठीक है. फिर हो जाते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय, हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन में, ठीक है. एम एस स्वामीनाथन, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना. 2024 ही गॉट भारत रत्न ऑल्सो. सो इनका नाम कौन नहीं जानता, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ईला रमेश भट्ट, अभी मैंने बताया, फाउंडर ऑफ सेवा, बट द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट गिवन, शी वाज गिवन इंडिविजुअली, ठीक है. ईला रमेश भट्ट कौन से कैटेगरी में, अगेन सेम वही कम्युनिटी लीडरशिप में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है. वेरी गुड. हाँ, स्वामीनाथन रिपोर्ट वाज आल्सो देयर एटसेट्रा. C2 प्लस 50% फॉर्मूला, एक क्वेश्चन ही पूछा था एग्जाम में, PYQ, ठीक है. फिर रजनीकांत अरोले, ये लोग इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है ना. PK सेठी से भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा, जस्ट रीड इट, बट प्रोमिनेंट नेम्स मैंने बता दिया, है ना. इसमें अरुणा रॉय भी, अगेन अरुणा रॉय वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड विद मजदूर किसान शक्ति संगठन व्हिच वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट टू कम अप विद RTI. तो देखो आप एग्जांपल ऑफ the NGOs or non-government organizing, just example of pressure groups participating in governance process, ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है. प्रेशर ग्रुप्स भी गवर्नमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना. दैट इज व्हाट यू शुड नो. शांता सेना ये सब हो गया, है ना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स. तो ये हो गया. अब हम लोग चलते हैं ये वाला पे, फोर्थ वन, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. यस, इसमें कोई इंडियन है, खोजो. यस, अमिताभ चौधरी एंड सत्यजीत रे. तो उसमें जर्नलिज्म तो नहीं, फिल्म लिटरेचर था, तो उसी में आ गया वो, अंदर सेम कैटेगरी आ गया. लिटरेचर क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट्स में आ गया. सत्यजीत रे बहुत फेमस फिल्म मेकर थे फ्रॉम बंगाल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड. अमिताभ चौधरी आल्सो गॉट, ये इनका इंपॉर्टेंट है. देन बोबली वर्गीस, जॉर्ज वर्गीस, सोम्बो मित्रा, ये लोग इतना फेमस नहीं, बट एक बार देख लो. देन ऑफ कोर्स इसमें ये है RK Lakshman, इनका नाम सुने हो, कार्टूनिस्ट है, वेरी फेमस. हैव यू हर्ड हिज नेम? And Mr. Arun Shuri is very famous. Nowadays, people do not know, but there was a time when he was a very famous journalist, and later on he joined BJP, also a very famous political, very famous journalist. I think Indian Express के editor वगैरह भी रहे थे. Arun Shuri is a very famous personality. तो आज के जमाने के लोग नहीं जानते हैं, but older generations knows. Ask your parents, for grandfathers, etc. They'll tell you. Okay. Then Mr. Ravi Shankar, है ना, सितार में बहुत फेमस है ना, सितार प्लेयर है. देन P. Sainath is also a very famous journalist, so you should be knowing it. He has done a lot of research on this. तो ये भी फेमस नाम है. Those who read newspapers, telegraph, etc. they must be knowing it. हाँ, शायद पहले मिनिस्टर भी रहते हैं. Yes, you are right. Krishna Sachdeva. I think Arun Shuri had served in some ministry also during Vajpayee ji government. नेक्स्ट है पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 1958 से 2008. मदर टेरेसा को मिला, एंड ऑफ कोर्स शी गॉट द इंडियन सिटीजनशिप लेटर ऑन, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो एक ऑपरेशन ब्रदरहुड फिलीपींस का, तो उसको ही मिला था, बट ये वाला ध्यान रखिएगा. देन वी हैव और इंडिया, देखो ये आई थिंक बाद में इंडियन सिटीजन बन गए होंगे, ये भी, बट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सब याद रखना पॉसिबल नहीं है. ऑफ कोर्स लक्ष्मी नारायण रामदास, ठीक है ना. रीचिंग across a hostile border to nurture citizenship based census between India and Pakistan. अच्छा, लक्ष्मी नारायण रामदास. अच्छा, 2024 में इनकी डेथ भी हो गई. जर्नलिज्म में रवीश कुमार को नहीं मिला था. कृष्ण सचदेवा, वी आर कमिंग टू दैट. हमको पता था आप ही पूछोगे, सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग, है ना. देन इमर्जेंट लीडरशिप 2001, ठीक है. इसमें किसको किसको मिला 2001 ऑनवर्ड्स में? संदीप पांडे को मिला इंडिया से, ठीक है. देन मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछेंगे. RTI को इंप्लीमेंट करवाने में, यानी RTI एक्टिविस्ट अरुणा रॉय वाज द वन हु एक्चुअली अंडर मजदूर किसान संगठन pressurized the government to come up with RTI, but RTI was used by Mr. Arvind Kejriwal
before joining politics. I'm sure you must be aware. RTI activist कहा जाता था इनको, अन्ना आंदोलन से पहले एक्सेट्रा. हाँ, ठीक है. तो ये किसने मिला? इमर्जेंट लीडरशिप अवार्ड 2001 प्रेजेंट में. ठीक है, फिर नीलिमा मिशॉल भी रहोगे, बट ये इंपॉर्टेंट, इनसे पूछ सकते हैं. देन टीएम कृष्णा साहब है ना, आर्ट से रिलेटेड है, इनको ही मिला था. ओके, देन नाउ यू कैन सी ये सब इसमें सारा देख लिए. अब देखो, ये हो गया. अब रिसेंट ईयर्स में इमर्जेंट लीडरशिप में दिया होता है, बट अगेन मिस्टर रवीश कुमार इज नॉट प्रेजेंट हियर, एंड देयर इज अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी. 2009 से के बाद से लोग कुछ अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी में देने लगे. अनकैटेगराइज्ड में तो उसको कोई नाम नहीं देंगे कैटेगरी में, बिकॉज 2008 में ऑल द अदर 5 कैटेगरीज वेर क्लोज्ड. ठीक है, तो एक तो इमर्जेंट लीडरशिप वाला कंटिन्यू किया गया, that is being continued today. अब प्लस एक जो दिया था अनकैटेगराइज्ड, वी आर नॉट गोइंग टू कैटेगराइज इन कैटेगरीज. ठीक है, तो अनकैटेगराइज्ड में दीप जोशी है ना, हेड एंड हार्ट, ये सब में. ठीक है, so that is what you should know. And Harish Ande from India 2011, and yes, this person Francis Kolandi. Then we have Anshu Gupta, then we have Bezwada Wilson, and yes, this is important, Sonam Wangchuk. I'm sure you must be aware, Ladakh. And he was having last year, he was in the news because he walked from Ladakh till Delhi, है ना, for some protest etc. He wanted 6 schedule status for Ladakh. इस पर मैंने क्लास लिया भी था last year. जो search on YouTube 6 schedule Ladakh career launcher, you will get a video. हाँ, then Ravish Kumar also got in this category. Journalism लिखा है, but main जो कैटेगरी का नाम, कैटेगरी आप कहोगे uncategorized. ठीक है, that is what you should be knowing. ठीक है, that's what you should know. Then ये लास्ट ईयर मिला था रवि करण, लास्ट ईयर. ऑन्कोलॉजिस्ट है बहुत फेमस, मतलब व्हाट वी कॉल ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब कैंसर के डॉक्टर, लास्ट ईयर फ्रॉम असम, है ना. तो ये सब ध्यान रखिए. रवि करण इज इंपॉर्टेंट. रवीश कुमार ऑफ कोर्स कैन बी आस्क्ड 2019. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो. एक और अवार्ड है 2022 में, बट शी रिफ्यूज टू टेक, और यही पूछेंगे. जो यूनिक सा चीज होता है ना, वही पूछते हैं. जो इजी होता है वो नहीं पूछते हैं. के शैलजा वाज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, and it is said there were news reports that she has done a good job in during first lockdown mein. Okay, so she was given Ramon Magsaysay Award, but she refused. Okay, why she refused? Because they were from CPIM, Communist Party of India, Marxist, and there is an allegation against Ramon Magsaysay that he crushed the communist movement, the communist हुक बालाप मूवमेंट था, उसको क्रश किया था. दैट्स व्हाई यू शुड नो. ही वाज हैविंग एन एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड, staunch एंटी कम्युनिस्ट, एंड ही डिफीटेड कम्युनिस्ट हुक बालाप इन फिलीपींस, एंड दैट्स व्हाई व्हेन शी वाज अवॉर्डेड शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड. उन्होंने मना कर दिया लेने से. ओके, दैट्स व्हाई आई थैंक देम एंड पोलाइटली रिफ्यूज्ड द अवार्ड, सेइंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग इट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी. दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज़. देखो, हाँ, जो आपने बताया वही याद रखे. देखो कृषि सचदेवा, देखो पूछने को तो कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आई ट्राइड माय बेस्ट टू इंश्योर कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर हो जाए. ठीक है, दैट इज व्हाट आई कैन से, है ना. अब एक चीज और है, एक इक्वेटर प्राइज, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इट वाज आल्सो रिलेटेड विद इट वाज आल्सो इन द न्यूज. तो 2-3-4 मिनट और लगेगा. व्हिच आर द फॉलोइंग अवार्ड्स इक्वेटर प्राइज? एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज गॉट, इसीलिए मैं बता रहा हूं. एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इन द सेम क्लास. इसी में मैंने सोचा डिस्कस करा लेता हूं. यस कार्तिक, यू आर राइट. आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू आंसर. यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अच्छा, एक बहुत फेमस इंडेक्स निकालती है अभी, कोई किसी ने लिखा था सर इंडेक्स बताइए. वेरी फेमस इंडेक्स रिलीज बाय यूएनडीपी, कोई बता सकता है? बहुत फेमस है. HDI, वेरी गुड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रेट. तो खैर इक्वेटर प्राइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. यूएनडीपी निकालती, मोस्टली यूएनडीपी, है ना, बाई एनियली, मतलब एवरी 2 ईयर्स अवार्ड दिया जाता है. एवरी 2 ईयर्स. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह पे, ये सब काम पे मिलता है ना, सस्टेनेबल कम्युनिटी इनिशिएटिव, ये सब रीजन. एंड इस बार इंडियन, हाँ ना, कौन से इंडियन को मिला? हाँ,
सो दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया, इम्पैक्ट, इनोवेशन सब देख सकते हैं, बट इतना काम का नहीं, जेंडर इक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन, बस एक बार रीड कर लेना। हाँ, यस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी गुड आइडिया बाय महबूब हक, यस गुड। तो चलो, अगर एसडीआई रिपोर्ट वगैरह आएगी तो विल डिस्कस इट। इसमें से एक इंडियन को मिला है, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट। बताइए, है ना? तो इसमें लिखा ना बहुत सारे कंट्रीज से विनर्स आए, बट वी आर कंसर्न अबाउट द विनर फ्रॉम इंडिया। विच ऑर्गेनाइजेशन? बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस कार्तिक है, वेरी गुड श्रेयास। किस लिए देते हैं? अगेन यहाँ लिखा हुआ है, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए थ्रू कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी इन्वायरमेंट और पॉवर्टी फाइट दोनों एक साथ किया जाए, है ना, इन्वायरमेंट को छोड़कर, दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो बीबी फातिमा स्व सहाय संघ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कर्नाटका बेस्ड, इनको मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, फार्मर्स अक्रॉस 30 विलेजेस थ्रू मिलेट बेस्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, मिलेट इज इंडिया फेमस, है ना, सीड बैंक, सोलर पावर प्रोसेसिंग एटसेट्रा, एग्रीप्रेन्योर्स इन एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये बहुत फेमस हुआ था, तीर्थ विलेज, दे बिलोंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुंदगोल तालुक, एंड दिस इज इन तीर्थ विलेज, यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। ठीक है, so we are ending this class here, and tomorrow we'll be discussing a very important topic, that is Saudi Pakistan defense pact. Okay, we'll discuss it because of course most likely there can be a question on that. So thank you everyone, thanks for watching. Please press the like button, share this video, subscribe to the channel.